In this module, we will discuss about the common needs which are addressed by the social group work method. So, what are the needs these needs are addressed on two levels, one on individual level and one on group level. So, on individual level means that if the individuals are having some sort of problems to cope with the normal life transitions, it is a routine that anybody can face this kind of problem to cope with the normal functioning. So these kind of needs can be addressed by the social group work. For example, like if the students adopt the higher education level in the foreign universities and they are suffering from cultural shock, or they have gone into they are strangers, an alien in a total new country, so they are suffering from a cultural shock, or they have some linguistic problem and they are not familiar with the cultural norms. So if there is any kind of transition which has been introduced in their life, so this can be solved through group work method. Similarly, if the individuals are in need of some sort of skills and information which can be shared by the other group members, so this need can also be addressed by the social group work method. Another need is very important, that in case of illness, group can provide great support for the individuals, and the patient can be taken care by the group members, and they can provide the physical and psychological and emotional support for that patient individuals. Simultaneously, another need can be catered while using the group work method, and that is to cope with the feelings of loneliness or in case of some loss. So अगर कोई बीमार होता है अपनी ज़िंदगी में और उसको ज़रूरत पड़ती है किसी की, चाहे वो कोई जिस्मानी बीमारी है या कोई नफ्सियाती या ज़हनी बीमारी है, तो ग्रुप वर्क मेथड के ज़रिए उसकी इस जो ये नीड है इंसान की, उसको किसी भी इंसान की, उसको जो है वो हल किया जा सकता है. ग्रुप उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स को अरेंज किया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है. इसी तरह से अगर किसी कोई तब्दीली आती है, कोई इमिग्रेशन की वजह से, कोई शहर तब्दील करने की वजह से, या कहीं पे कोई एकेडमिक प्रोग्राम ज्वाइन करने की वजह से, और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम पेश आती है, तो सोशल ग्रुप वर्क मेथड कैन बी यूज्ड टू एनहांस द सोशल कैपिटल. इसी तरह से बाज़ औक़ात एक इंडिविजुअल की एक्सेस नहीं होती किसी इन्फॉर्मेशन तक या स्किल तक, तो ग्रुप वर्क मेथड जो है, जिसमें डिफरेंट जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस शेयरिंग से जो लर्निंग होती है वो बहुत रिच होती है, और उससे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं अबाउट द एग्जिस्टिंग एंड द प्रेजेंट रिसोर्सेज विद इन द कम्युनिटी. और अगर कोई किसी वजह से किसी को कोई बिजनेस लॉस हुआ है, या वो किसी लव्ड वन रिलेशन के जाने की वजह से, डेथ के लॉस की वजह से, या किसी और वजह से वो एक फीलिंग ऑफ लॉस में है या फीलिंग ऑफ लोनलीनेस में है, तो इस नीड को भी केटर किया जा सकता है थ्रू ग्रुप वर्क मेथड. सो द सोशल ग्रुप वर्क मेथड कैन बी वेरी इफेक्टिवली used to address the common needs which any individual can face during their life cycle.